Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying the ideas of good governance. We started with the point like sixth point, need to follow transparency and public interest. Administration must be transparent. Nothing should be done in secret. Secrecy अगर आप रखोगे तो क्या है, लोगों के मन में गलत ख्याल आएंगे. It will eliminate the almost universal corruption in politics and administration today. Civil servants should leave behind their caste, community, language in their own work. At a workplace, a civil servant is just a public servant acting in public interest, trying to serve the public. Need to develop good character of person in government. For good governances, character of those who are entrusted with public functions must be above board. When we do not have enough character in society, there will be more quarrel and fight, agitation and unrest, corruption and nepotism than peace and harmony, control and happiness, honesty and upright. When we do not have enough character, religion will be reduced to soulless ritualism, ethical code will be perverted into sophistry, altruism will become self-aggrandizing social work, our spirituality will be reduced to secularity, secularity to hedonism, and hedonism to ruination, sure than death. But to manage others, be critical by question your word and attitude with love. जो भी करना है आपको प्यार से करना है. लव इज़ द ग्रेटेस्ट परसेसिव पावर वी नो इन लाइफ. Action plan for an effective and responsive government rightly stress the need of good governance. See, action plan for an effective and responsive government, what it will happen, it will stress the need of good governances. Necessary corrective steps must be taken to arrest the personal drift in government and public service and take urgent measure to restore the faith of the people in the fairness and capacity of administration. Need to inject improvement and reform in administration. उसके अंदर they are given the certain points. Openness in the sense of having wide contact with the people administered, a sense of justice, fair play, and impartiality in dealing with men and matter, sensitivity and responsiveness to the urge, feeling, and aspiration of common people, securing the honor and dignity of human being, humanity and simplicity in the persons manning the administrative machinery, and their easy accessibility, cheating and sustaining an atmosphere conducive to development, growth, and social change, honesty and integrity in thought and action. Then D.K. Oza, in his article based upon his experience as an ICS officer, suggested the following to ensure good governances. Decision must be taken in public interest. There has to be change of attitude and not in the public servant. They need to promote and follow. नो यार, ये सब हो गया था अपना. ओके, अपन बहुत पहले का कुछ देख रहे हैं. एनीवे, विल स्टार्ट विद द ई गवर्नेंसेस. ओके, ई गवर्नेंस क्या है? इज मच मोर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस. देन मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस क्या है? It is a new pandemic shift has been developed in the field of e-governance by the application of ICT in the process of governing called electronic governance or e-governance. The main focus of the e-governance or electronic governance is to provide transparent, equitable and accountable service delivered to the citizen. E-governance is not just about government website or email or financial transaction. It will change how citizens relate to government as much as it change how citizens relate to each other. Then objectives of e-governance. We are moving from IT to communication technology and from ICT to information society. But टेक्नोलॉजी से सब कुछ होता है क्या? अपार्ट फ्रॉम दैट अपने को ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करना पड़ता है और उस हिसाब से अपने को काम करना है. सी
Then delivery essential service to citizen, ensure transparency, create healthy relation between government and citizen, then enhance citizen empowerment and democratization, enhance productivity and efficiency of administrative function, eliminate poverty, encourage for direct participation of citizens in government policy making process, creating a business friendly environment, improving the overall quality of life of a common man, providing prompt delivery of service at the doorstep. Then we look at the characteristic of e-governance. It has been proven from the concept of e-governance that it is a powerful means of public service in the present era. Some of its features can be found by observing the functioning of e-governance. See, B. Bureaucratization. Due to e-governance, the gap between the people and the government in all the service of government is narrowing, and the dependency of the people on the bureaucracy is also greatly reduced. See, ड्यू टू ई गवर्नेंस क्या है, द गैप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, और लोग क्या है, लोग दैट डिपेंडेंसी ऑन द पीपल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इट इज़ ऑल्सो ग्रेटली रिड्यूस्ड. क्यों? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. देन ई सर्विस, इट्स मेन फीचर is the provision of service through the internet. E-service, its main feature is the provision of service to the internet. As a result, we get government to consumer, government to business, government to electronic etc. service. This is already discussed in the section of type of governances. Then international services. Through e-governance, all the essential services can be delivered to the citizens who are living outside their country for job purpose or any other reason. It enhances the right to express to the citizen. See, through e-governance क्या है, all the service कैन बी डिलीवर टू द सर्विसेज. जो भी सर्विस रहती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में वो सारे सिटीजन तक पहुंच सकती है. इवन वो अगर इंडिया से बाहर रहेंगे तभी भी उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी. इट एनहांसेस द राइट टू एक्सप्रेस टू द सिटीजन. सी, इट एनहांसेस द right to express to the citizen. Using the means of e-governance, anyone can share their views with the government on any bill or act or decision taken by the government. See, using the means of e-government क्या है, anyone can share their own views, government bills, decision taken by the government. ये हर कोई ये इंफॉर्मेशन लोगों तक हर कोई पहुंचा सकता है. Now, economic development. With the introduction of e-governances, various information like import, export, registration of companies, investment situation, etc. are available through the internet. See, with the introduction of e-governance क्या है, बहुत सी information like import, export, registration of company, investment, इन सब की information अपने को through internet मिलती है. As a result, time is saved, procrastination decreases and economic dynamic increases. टाइम क्या, टाइम बचता है, अपना टेंशन कम होता है और अपन क्या इकोनॉमिकली अपन भी स्ट्रांग होने का देखते हैं और सोचते हैं. देन रिड्यूस इनइक्वालिटी. यूजिंग ई गवर्नेंस टूल्स एवरीवन कैन गैदर इंफॉर्मेशन एंड एम्पावर देमसेल्फ. से यूजिंग ई गवर्नेंस टूल्स क्या है, एवरीवन हर कोई इंफॉर्मेशन ले सकता है एंड एवरीवन कैन एम्पावर देमसेल्फ. इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, knowledge is power, and means of e-governance empower us by providing relevant information at minimal cost, effort and time. See, ये क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, now we are living in the globalized world. See, यहाँ पे क्या है, knowledge is power. knowledge को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और अपने को ये सारा नॉलेज कहाँ से मिलता है, we get this from the e-governance. और with the help of e-governance we can get all the relevant information at minimum cost, at minimum कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में और कम से कम पैसे में अपने को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है. सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई गवर्नेंस लाइक ड्यू ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ई सर्विस, इंटरनेशनल सर्विस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रेगुलर inequality.
Now we'll be looking at the benefits of e-governances. E-governances has emerged because of the increasing internet of government and citizens around the world to experiment with and learn to exploit new media and the latest technology as it involves new styles of leadership, new ways of debating and deciding policies and investment, assigning education, listening to citizens, and organizing and delivering information and services. See, e-governance has emerged because of e-governance क्यों आया? Because of increasing interest of government. एंड सिटीज़न, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट में इंटरेस्ट ले रहे थे, राइट, गवर्नमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं, इसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहे थे. एंड सिटीज़न अराउंड द वर्ल्ड वांट टू एक्सपेरिमेंट विथ, और सिटीज़न को पूरे वर्ल्ड के जो सिटीज़न है उनको एक्सपेरिमेंट करना था, उनको नए नए मीडिया एक्सप्लोर करना था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी, न्यू स्टाइल ऑफ लीडरशिप, न्यू वेज ऑफ डिबेटिंग एंड डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड accessing education, listening to citizens, and organizing and delivering information and services. If e-governance is implemented successfully, it can provide following benefit for development. See, अगर आप e-governance अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? Increase the accessibility of individual citizen to information and service that allow them to influence government operation. See, increase the accessibility of individual citizen to inform and service that allow them to influence government operation. Opportunity to earn a living by living a new skill in knowledge based economy. See, you will get some new opportunity learning new skills in a proper knowledgeable way, producing same output at lower total cost. See, प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, वही आउटपुट मिलेगा बट सस्ते में मिलेगा आपको एट द लो कॉस्ट. अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड बैंकिंग ऑनलाइन. सो यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड यू कैन डू बैंकिंग ऑल्सो ऑनलाइन नाउ. रिडक्शन इन टाइम एंड पेपर वर्क, आपका टाइम एंड पेपर वर्क भी कम हो गया है. सपोर्ट्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एन इफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्लो. सी, supports effective decentralized decision making, and this is done by providing an efficient information flow. Various government departments and it very easy to perform their functions like collecting of tax, water charges, professional taxes, etc. See, बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या है, वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. अपन लाइट बिल अभी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, राइट, वाटर टैक्स वी पे ऑनलाइन, अपन बहुत कुछ ये सारे बिल्स है ना अपन ऑनलाइन पे कर देते हैं. एनहांस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस. सी, एनहांस, आपको इंफॉर्मेशन कहीं पर भी बैठ कर मिल सकती है, लाइक डिस्टेंस इज नॉट एन मैटर हियर. डिलीवर इसेंशियल सर्विस टू सिटीजन. सी, you can deliver essential service to citizen. Improving agriculture productivity, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी. इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट. सी, रिसोर्स मैनेजमेंट अपना अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे. enable marketization by supplying information related to market and enhance public service. See, enable हाँ बराबर पेज पे आ गया. enable marketization by supplying information related to market and enhance public services. See, मार्केट क्या है कैसा है उस हिसाब से आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी और उस हिसाब से आप आपका लोगों को सर्विस दो. यू टेक योर ऑन डिसीजन. ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. सी, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. ऑल नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलेशन कैन बी पुट ऑनलाइन so that cases can be disposed faster. See, all notification and circulation this can be put online. ये सारा ऑनलाइन आ सकता है so that जो भी केसेस है वो फटाफट ख़त्म हो जाए, मैटर ख़त्म हो जाए. हेल्पिंग इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग
among the citizen and the government machinery. See, helpful in confidence building. आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड देन क्या है, गवर्नमेंट भी अच्छे से काम करेगा यहाँ पे. Market expansion and organized job creation and its overall impact on the macro economy. See, market क्या होता है, market expansion होता है and then you get a proper organized job creation and क्या है, overall impact on the micro economy होता है यहाँ पे. Transition from cumbersome procedure for clearance to improved relation by providing quick approvals. See, transition from cumbersome procedure for clearance to improve relation by providing quick approvals. It is an innovative way of administration. See, ये क्या है, it is an innovative way of administration. It facilitates easy monitoring and tracking of files. There is no place of for red tape. See, ये एक इनोवेटिव वे है. यहाँ पे क्या है, आप आपकी फ़ाइल का ट्रैक रख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी फ़ाइल क्या कहाँ पे है, किसके टेबल पे है, कौन कैसे काम कर रहा है, ये सब आप रख सकते हैं और फिर गलत काम के लिए कोई स्कोप ही नहीं रहता है यहाँ पे. देन इश्यूज फॉर ई गवर्नेंसेस. Issues for e-governance are as follow. Governments all over the world are trying to utilize IT for various purpose. See, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू यूटिलाइज IT for various purpose. The initial motivation usually comes from the need to improve efficiency of processes in the government. See, the initial motivation usually कहाँ से आता है, it comes from the need to improve efficiency of processes in the government. This may be conquered or followed by the second step comprising re-engineering of the processes. See, this may be conquered or followed by the second step comprising re-engineering of the processes. E-government applications bring government into more than efficient and effective government in delivery of service and internal administration and communication. See, e-government application क्या करता है, brings government into more than efficient and effective government in delivering of service and internal administration and communication. E-government brings countries and contaminates its citizen into the international stream. See, e-government क्या करता है, countries को सारा एक करता है और वो इट मेक श्योर कि पापा पूरा कंट्री एक साथ रहे, पूरा वर्ल्ड भी यूनाइटेड होके काम करे. दिस ब्रिंग्स कल्चर चेंज बोथ विद इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ एंड इन द ओवरऑल सोसाइटी. इंक्रीज्ड लिंक बाय गवर्नमेंट एंड द सिटीजन अलाइक टू इंटरनेशनल वेबसाइट, न्यूज़ ग्रुप्स, chat rooms, email communication, building of international network through the use of email and the powerful wireless technologies all contribute to an emerging linked world that operate continuously. See, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कल्चर है ये चेंज होता है, गवर्नमेंट का इटसेल्फ भी चेंज होता है, अपनी सोसाइटी भी चेंज होती है और क्या है, सब एक दूसरे से गवर्नमेंट से जुड़ जाते हैं. लाइक through international website, news groups, chat room, email communication and building a international network. And international network कैसा होता है, it is through wireless technology, that is it is with the help of email, right? It is with the use of email and the powerful wireless technology, all this contribute to an emerging link world that operates continuously. और यहाँ पे क्या हो रहा है, the world is operating continuously. We must admit the great potential of new technology for enhancing democracy. Without supporting either, this is yet happening or it will necessarily happen without a lot of sustained effort. See, we must admit the great potential of new technology. See, ये जो great potential of new technology, we should make use of this for enhancing democracy. Right? And it should be without supporting either, this is yet happening or it will be necessary happen without lot of sustainable efforts. Then there are very considerable opportunity but so too are their risk. See, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है बट ऐसा नहीं कि रिस्क कुछ नहीं है, देयर इज़ अ रिस्क ऑल्सो.
Those can most effectively be minimized if we first open our eyes to both the benefits and the potential cost of the change in the culture of democracy that the new technologies are bringing about and are likely to continue to bring about. See, there are very नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी है, रिस्क भी है. तो अपने को क्या करना है, अपने को सब कुछ इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना है और रिस्क अपना मिनिमाइज करना है. तो पहले अपने को अपनी आँख खुली रखनी पड़ेगी और अपने को कॉस्ट क्या है, चेंज कल्चर क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब को देखना है, समझना है, एंड देन वी शुड कंटिन्यू आवर वर्क. Ratner, an international consultancy firm, has formulated a 4-phrase e-governance model. See, it's Gartner. ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म है, राइट? इट हैज़ come up with 4 phrases of e-governance mode. This can serve as a reference for government to position where a project fits in the overall evolution of e-governance strategy. See, this can serve as a रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट. ये एक रेफरेंस बन सकता है गवर्नमेंट के कि बाबा उनका प्रोजेक्ट कहाँ पे फिट होता है, ई गवर्न स्ट्रेटजी में कहाँ पे उनका फूड प्रोडक्ट फिट होता है, कहाँ पे कैसे काम कर सकता है. अकॉर्डिंग टू Gartner, e-governance will mature according to following 4 phrases. See, according to Gartner क्या है, e-governance it will mature according to the following 4 phrases, that is information, interaction, transition and transformation. See how it will work. It will work as per the information, interaction, transaction and transformation. E-government is itself a process or a mean to an end rather than end in and of itself. See, e-government क्या है, is itself a process. e-government उसी में एक process है, एक process है, या फिर it is a mean to an end rather than end in itself, या फिर एक mean to end है या फिर an end to itself है. E-government is still in the earlier stage of development and promise to evolve with advance in technology and increased acceptance and trust in electronic communication. See, e-government क्या है, वो अपनी early stage of development में है. See, it is still developing. It has not yet developed completely, and it promises to develop in technology, increasing the use of technology and trust in electronic communication. Initial forays into e-government have focused mostly on providing enhanced access to information and basic service. See, initially क्या है, foray into e-governance is initiated focus on providing enhanced access to information and the basic service. Then, although the full transformative effect of e-government remains largely unrealized at this time, the rapid growth in interest and resources dedicated to e-government initiatives may contribute to swifter changes. See, although क्या है, the full transformative effect of e-governance remains largely unrealized, कि अपने को बहुत बार क्या पता है, अपने को पता ही नहीं चलता कि कितना अपन इफेक्टिवली काम कर रहा है ये e-government एंड ऑल. तो क्या है, तो द रैपिड ग्रोथ इन इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज डेडिकेटेड टू e-government इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट टू स्टिफर चेंज. सो ये जो रैपिड ग्रोथ इन इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेज रहता है, इट विल डेडिकेट टू e-government initiative and it contribute to stiffer changes. A set of motivation may come from the need to provide various social service to citizens for improving the quality of life of the citizen. See, a set of motivation may come from a need. It would come from the need and it would provide various social service to citizens for improving the quality of life of the citizen. A parallel set of motivation may be to strengthen the democratic foundation of governance. See, there would be a parallel set of motivation which may be strengthen the democratic foundation of governance. This social service and democratic enabled correspondent to the new activity that become economically viable due to altered cost structure due to the use of information technology. See,
ये जो सोशल सर्विस है एंड डेमोक्रेटिक, व्हाट हैपन, दे enabled correspondent to new activity and economically valuable due to altered cost structure due to use of information technology. We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll continue with the ninth point. Thank you.